This completes these two conversions. One of you just sit here. Okay, it will be better for you also and for me also. You have to write down the reactions. Okay, you have to complete this with structure of this, structure of that. Okay, isopropyl bromide. How will you convert isopropyl bromide to isopropanol and propene to isopropanol? So, what is the structure of isopropyl bromide? Okay, you can look picture notes में देख सकते हो, and then to convert. Okay, what we can use here? Okay, aqueous KOH. Okay, this is one of the method for the preparation of alcohols from alkyl halides. So, what is the structure of isopropyl bromide? Anyone? Right? This is isopropyl bromide. We are reacting this isopropyl bromide with aqueous KOH. Okay? So, beer will eliminate like this. Sorry. Beer will eliminate like this. Okay? KBr and OH will come here. Right? So, isopropanol, you can write down the structure. Right? Just replace this Br by OH. So, that will be isopropanol. Okay? Now, the second one, propene. Here two steps of it involved. One step is by reaction with concentrated H2SO4 and the second one is hydrolysis of the intermediate. So in this reaction we can directly write what is propene. This one is propene. Okay. So these reagents now add H2O according to the Markovnikov's rule. H plus will goes to higher number, O minus will goes to lower number of hydrogen atom. So it will be again the same compound, isopropanol. Okay. So this was the conversion of propene into the isopropanol. So you what? It's a reagent. Okay. अल्काइल हैलाइड्स प्लस एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको. ओके. एग्जाम में तुमको पूछ सकता है डायरेक्ट, ये पूछ सकता है. ओके. ये रिएजेंट तुमको याद रखना पड़ेगा. ओके. दे कैन आस्क एनीथिंग. वो पूछ सकते हैं प्रोडक्ट बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बताओ, रिएक्शन लिखने को बोल सकते हैं. एनीथिंग दे कैन आस्क, और दे कैन आस्क राइट डाउन द रिएजेंट, ऐसे भी पूछ सकते हैं. ओके. So, this was the preparation of alcohols. Now, anyone remember which then primary, then secondary, then primary? So, tertiary carbocation, tertiary alcohol will undergo hydration reaction very fast, very easily. Okay, and after that secondary and then primary. So, which one will undergo hydration reaction very fast?
Which one? Huh? Which one? Tertiary. Okay. So have you heard the term oxidation? Oxidation. So we can distinguish primary. These are the four reagents which we can use as an oxidizing agent. Potassium dichromate. Okay. This one potassium permanganate. Very good. This one potassium permanganate. Okay. This one chromium trioxide. Okay. So K2Cr2O7 in acidic medium, right? CrO3 in acidic medium, and we can use KMnO4 in both basic medium as well as in acidic medium. So KMnO4 acts as an oxidizing agent in both mediums, acidic, basic as well as acidic. Okay. While K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent only in the acidic medium, right? This is the difference, and this is the advantage of KMnO4, that we can use it in both basic and acidic, right? So these are the oxidizing agent which we will use for the oxidation of alcohols, right? Of primary alcohol, methanol, ethanol, okay, anything. So this is methanol, okay, ethanol, okay, and I am doing the oxidation of this using K2Cr2O7 plus dilute H2SO4. Okay, here the reagent can be anything, right? जो मैंने 4 लिखा है, okay, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, okay, so तुम्हें पता होना चाहिए कि which are the reagent we are using, okay, एग्जाम में चारों में से कुछ भी आएगा, जो अभी मैंने लिखा है ना, तो एक if they ask for a simple reaction, then you can give any oxidizing agent, you can use any oxidizing agent. So here I am using this one, this ethanol on oxidation will give what is this? No, not ketone. What is this, Vishal? Aldehyde. Very good. So what is the name? Acetaldehyde. Okay. So again, this acetaldehyde again on oxidation, same reagent, carbon atoms. Here the number of carbon atoms. How many carbon atoms are here? 2 carbon atoms are here. In the product, 2 carbon atoms. Again 2. In the product, 2. So starting from the 2 carbon, in case of primary alcohol, okay, we will get 2 carbon acid. मतलब ऐसा acid जिसमें 2 carbon रहे. Okay, there is no reduction in the number of carbon atom, right? So this is the property of primary alcohol. Primary alcohol में कोई reduction नहीं होता है. We will get the same number of carbon atom in the aldehyde as well as in acid. Okay, so next, secondary alcohol, example anyone? Isopropyl alcohol, isopropanol. Okay, so यहाँ पे समझा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ?
इसमें डाउट आया कुछ? अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बना? सी, दिस इज H, ओके, दिस इज H, ओके, राइट. So what is oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen. So what we are doing here? We are removing H2, right? So यहाँ पे double bond and we got the product, right? So it is an oxidation reaction, removal of hydrogen. And water is formed. No, water will not be formed. There it is one oxygen. Okay. These two hydrogen and this oxygen, okay. Don't bother about the byproducts, okay. Just concentrate what's the major product, what is the हमारी requirement क्या है, okay. So now secondary alcohol, कोई इसका oxidation करो, what will be the product? Just carry out this reaction same as we carried out in the above reactions. So here what will be? Again we will do oxidation, right? Again this will be the same, this will be the same. What will be the product? No, what will be the product? In case of secondary alcohols, that was in case of primary alcohol we will get aldehyde. In case of secondary alcohol we will get ketone. So right, so हाइड्रोजन यहाँ से गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, राइट, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट, समझ रहे? हाइड्रोजन यहाँ से गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, -H2O and this there will be double bond. So what's the name of this compound? Not this compound. It's a very important compound we use daily in our day-to-day life. एसीटोन देखा है लैब में, उड़ जाता है, वोलेटाइल, सो दैट इज एन एसीटोन. नेल रिमूवर, राइट, नेल पॉलिश निकालते हैं, क्या रहता है? एसीटोन, राइट. सो व्हाट इज दिस? एसीटोन. Now the second step of oxidation here, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? विग्रस डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन, ओके. वहां पे कीटोन अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड ने नॉर्मल अपना ऑक्सीडेशन दिखाया और एसिड बना दिया. यहाँ पे कीटोन के प्रेजेंस में डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन होता है. एंड व्हाट विल द प्रोडक्ट हियर? What is the product? Acidic acid. So what we can see here, number of carbon atoms 2. Look everyone here. सब यहाँ पे देखो, number of carbon atoms 2 in the product, 2 here, 2 3 in acetone, 3 here, 3 but at the end 2. So there is, यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया. So in case of ketones, sorry, secondary alcohols, we will get the acid with 1 carbon atom less. हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 कार्बन से, एंड वी आर गेटिंग 2 कार्बन. कैसे? ये CH3 दिख रहा है, राइट? आई कैन राइट लाइक दिस, ओके. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यूज होते हैं,
राइट, विग्रस रिएक्शन है, कीटोन एक ऑक्सीजन में मानता नहीं है, उसको 4 ऑक्सीजन चाहिए। ओके, सो एक ऑक्सीजन यहां पे गया, क्या बनाया, H2O, राइट। 2 ऑक्सीजन इसके पास गए, CO2 बनाया, राइट। 1 ऑक्सीजन इसके पास आया, 4 ऑक्सीजन। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट, H2O, CO2 and the product is acetic acid. So you got where the 4 hydrogens कहाँ गए, 4 ऑक्सीजन कहाँ गए, समझा। अगेन बताऊं, 3 हाइड्रोजन है, ओके। सो एक ऑक्सीजन यहाँ पे H2O बनाने में निकला, 2 ऑक्सीजन CO2 बनाने में निकला, और ये ऑक्सीजन यहाँ OH बनाया उसने, राइट। सो व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट, H2O प्लस CO2, ओके। सो रिमेम्बर 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है और हमें एंड में 2 कार्बन एटम मिलता है इन केस ऑफ कीटोन्स, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल्स। सो नाउ लेट्स कम ऑन टर्शियरी अल्कोहल्स, ओके। शुड आई रब दिस, रिएक्शन में जल्दी नहीं जाएगा, वाई, OH हम एज ऑलवेज यहां से निकाल सकते हैं, बट हियर देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। इन सेकेंडरी अल्कोहल क्या था, इसके पास हाइड्रोजन था, इन प्राइमरी इसके पास भी हाइड्रोजन था, इन केस ऑफ टर्शियरी देयर इज नो हाइड्रोजन एटम्स। सो ये रिएक्शन लेस रिएक्टिव होता है। नाउ इन द लास्ट लेक्चर मैंने जाते जाते क्या बताया था, टर्शियरी अल्कोहल और H2SO4 का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल एंड H2SO4। लास्ट लेक्चर सॉरी मैंने जाते जाते बताया था डिहाइड्रेशन, ओके। H2SO4 जहां आएगा और वहां पे अल्कोहल भी रहेगा, वो भी स्पेशली टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी इज वेरी फास्ट, ओके, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में। व्हाई, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल, राइट। सो टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है। सो इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वहां पे भी H2SO4 था, बट उसने रिएक्शन नहीं किया। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वहां पे भी H2SO4 था, बस उसने रिएक्शन नहीं किया। बट इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल सिंस इट इज वेरी फास्ट इन रिएक्शन विद H2SO4, ओके, हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, इट विल गेट डिहाइड्रेट, राइट। इसका डिहाइड्रेशन होगा फर्स्ट रिएक्शन। सो क्या बनेगा, राइट, ये समझा। नाउ नेक्स्ट दिस प्रोडक्ट व्हाट वी कॉल, इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 4, anyone can guess the name of this compound, iso, neo, sec, you can see, okay. So it's an iso, so isobutene, okay. So isobutene this is the product. So how we got this product, just arrange these 4 oxygen atoms here, जैसे हमने सेकेंडरी में किया था लास्ट टाइम। सो कैसे होगा, एक ऑक्सीजन मैंने इसको दिया, ओके, एंड दिस वन इज लाइक दिस। सो एक ऑक्सीजन मैंने इसको दिया, राइट, H2O,
here CO2. So what is the product? Acetone. समझा? Right? So in the first step, ये फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में एक कार्बन कम हो गया, राइट? 4 कार्बन से 3 कार्बन हो गया इन द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप, अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, एसीटोन, अगेन what was the last product? So यहाँ पे 4 कार्बन, वहां पे 3, फिर 3, then 2. So it's different from all these 3. Okay, all primary, secondary and tertiary, they all give different reactions. ये ऊपर वाला लिखा? Okay, and राइट, अल्डिहाइड बनाया था, राइट? एनीवन? सो अगेन दिस वन एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो 1 कार्बन. ओके, हियर सेम कार्बन, राइट? हियर ऑल्सो सेम कार्बन. ये 2 था, सेम कार्बन. ये जितना कार्बन था उतना हमें एल्डिहाइड में भी मिला था, राइट? हमारे एग्जांपल में क्या था? इथेनॉल था जिसमें 2 कार्बन था. एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मिला था जिसमें 2 कार्बन था. एसिडिक एसिड मिला था जिसमें भी 2 कार्बन था. सो कार्बन एटम आर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ओके, इन ऑक्सीडेशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सेम बोथ एल्डिहाइड एंड एज वेल एज एसिड. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, this was ketone, again acid. So यहाँ पे हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था जिसमें 3 कार्बन थे, राइट? हमें मिला क्या बीच में? कीटोन विद नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, बट एसिड हमें 1 कार्बन कम मिला, राइट? सो प्राइमरी अल्कोहल डिफरेंट हुआ सेकेंडरी अल्कोहल से, राइट? नाउ टर्शियरी अल्कोहल, वो कैसा रिएक्शन देते हैं? टर्शियरी अल्कोहल में 4 कार्बन थे, राइट? ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स, राइट? अगेन ऑन ऑक्सीडेशन right? 4 3 2 3 3 2 2 2 2. So we have to just concentrate that. इसमें 1 कार्बन का लॉस होता है, सॉरी उसमें 1 कार्बन का लॉस होता है, इसमें 1 कार्बन का, इसमें 1 कार्बन का. So we can distinguish primary, secondary and tertiary on the basis of these oxidation reactions, right? So हो गया, लिखिए. प्रिपरेशन, रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मिथेनॉल, इथेनॉल आर इनसोल्युबल, सोल्युबल इन वाटर. ओके, एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मिथेनॉल सोल्युबल है, इथेनॉल सोल्युबल है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल थोड़ा कम सोल्युबल, हेप्टानॉल और कम सोल्युबल. सो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज. ओके, दिस वाज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स. In case now boiling points, again the same. लोअर मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है कि ज्यादा रहता है? लाइक सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस लाइक सोलिबिलिटी एज वी मूव टू द हायर ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल्स. राइट, समझ रहा है?
अल्कोहल विथ 1 कार्बन, अल्कोहल विथ 6 कार्बन, ये ज्यादा सोल्यूबल रहेगा इन वाटर, राइट, सोल्यूबल इन वाटर, ये लेस सोल्यूबल इन वाटर, राइट. वाई, मैंने बताया था, इन केस ऑफ 1 कार्बन, एक ही कार्बन है, राइट, इन केस ऑफ 6 कार्बन इट कैन बी एनीथिंग. ओके, इफ इट इज 6 कार्बन, दिस वन इज 1 कार्बन, सो इसमें ये नॉन पोलर बॉन्ड है, राइट, नॉन पोलर, सो ये पोलर है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से वाटर में सोलिबिलिटी बढ़ती है. ओके, जब 6 कार्बन आते हैं तो नंबर ऑफ नॉन पोलर का क्राउड बढ़ जाता है, राइट, नॉन पोलर ज्यादा हो गए. ओके, सो सोलिबिलिटी भी कम हो जाती है. ओके, सोलिबिलिटी मीन्स व्हाट, वाटर इज पोलर, राइट, वाटर इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर. सो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, राइट. समझ में आया? लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल while हायर मेंबर्स आर लेस सोल्यूबल और नॉट सोल्यूबल. सो ऐसे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें क्या रहता है, प्राइमरी में ऐसा, सेकेंडरी में ऐसा, ओके, और टर्शियरी में. सो कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा वाटर में? वेरी गुड, विच वन? प्राइमरी. सीटी में पूछता है, एंट्रेंस एग्जाम में, एमसीक्यूज में पूछता है. ओके, डोंट फॉरगेट. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम क्राइटेरिया. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल. ओके, दोनों के पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है, राइट. सो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिंपल प्रोपेनॉल, राइट, एंड दिस वन isopropanol, right. So which one will be most soluble in water? Straight chain, right. Straight chain will be most soluble in water. Boiling point सबसे ज्यादा इसका रहेगा. Okay, write down these things whatever I am saying. Okay, they are asked in exam. Next topic is, what is this? So इसकी डेफिनेशन क्या थी? हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू एनी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, राइट. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को अटैच है कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप तो डेफिनेटली अल्कोहल है. ओके, बट इफ अल्कोहल इज अटैच टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट. सो इफ ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, सॉरी नॉट अल्कोहल, if hydroxy group attached to aromatic hydrocarbon, then it is known as phenol. What? Phenol, right. So this is, just write down, this is phenol, this is alcohol. So this one is aromatic hydrocarbon, this one is aliphatic hydrocarbon. So hydroxy group attached to aliphatic, hydroxy group attached to aromatic. Okay, so this was phenol. Now have you heard the names ortho, meta, para? Ortho, meta, para, किसी ने सुना है नाम? ऑर्थो, मेटा, पैरा, सेम टर्म. राइट. सो वो एरोमेटिक रिंग रहता है, उसको नेमिंग करने के लिए हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज करते हैं, राइट. एरोमेटिक रिंग रहती है, उसकी नेमिंग के लिए हम ऑर्थो, मेटा, पैरा यूज करते हैं. ओके, सो अगर ये फेनॉल है, ओके,
राइट, ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पता है ना। सो ये फेनॉल है, तो ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, ये पोजीशन अगेन दिस वन, अगेन दिस वन. Just write down what are the position of ortho meta para with respect to this, right? With respect to this substituents, that is hydroxy group. Here substituents can be anything, right? हमारे केस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे ये कौन सा कंपाउंड है, एनीवन नोस? डोंट नो? राइट, दिस इज टोल्यून. इसमें मैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन क्या रहेगा? ओके, राइट. So what we can conclude? ट्राइनाइट्रोटोलिन, वो टोल्यून है ना, उसको 3 नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो 2 ऑर्थो पोजीशन पे, 1 पैरा पोजीशन पे. ट्राइनाइट्रो कैन बी एनीवेयर, बट जनरली जो फेमस ट्राइनाइट्रो मीन्स व्हाट? 3 नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रो ग्रुप्स. सो दिस इज टोल्यून, दिस इज नाइट्रो, दिस वन नाइट्रो, this one nitro. So this is a trinitro-toluene, right? So now let's give naming like IUPAC in this aromatic compound, right? So यहाँ पे ये पहला कार्बन, right? 1 2 3 4 5 6. So 1, not 1, 1 2 3 4 5 6. Okay, this is not like this. It is, this carbon is here ना. Okay, पहला कार्बन, तो पहला कार्बन, राइट, राइट. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड? 2,6 पोजीशंस आर ऑर्थो, राइट, एंड 3,5 पोजीशंस आर मेटा, एंड 4 पोजीशन इज पैरा. ओके, सो वो ट्राइनाइट्रोटोलिन है, उसका नाम बता सकते हो? IUPAC नाम 1 2 3, इसको नेमिंग करके 1 2 3 4 5 6. सो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलिन, राइट, उसका IUPAC नेम, राइट. 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलिन. Let's write down these all things. Okay, they are very important. They are the basics of phenols. Basics clear रहेगा. Then so ortho meta para हो गया, लिख के everyone. Chlorobenzene, right? Now bromobenzene. Okay, इसका नाम 1,2-dibromobenzene is IUPAC name. Okay, one of the IUPAC name, that is also right. And the second name ortho, right, ortho position पे है, ortho dibromobenzene, right, ortho dibromobenzene. Okay, so write down both names. Ortho, we can you can show it like this.
Okay, only first word, ortho, O. Okay, OMP. So it is like IMP. Okay. जस्ट हम याद करने के लिए कि सीक्वेंस क्या है. ओके, ऐसा मत कर देना ऑर्थो के पास पैरा लिख देना. राइट, ऐसा है. ओके, OMP. सो इसका नाम वन कॉमा टू डाई ब्रोमो बेंजीन. ओके, इसका नाम IUPAC नेम it is like alphabetical order. A B C D E F G H I J K. Okay, so bromo B come first, so 2 bromo, not 1, 2 ado bromobenzene. 2 ado. It should be 1 bromo, 2 ado. हाँ, 1. Yeah, very good, very good. 2, sorry, 1 bromo 2 ado benzene. Okay, that will be the correct name. 1 bromo 2 ado benzene. Okay, so क्या क्या होते हैं हेलोजेंस में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So B comes first, so then C, then F, then I. Okay, A B C D E F G H I, A B C D E F G H I. So ऐसे नेमिंग करेंगे. राइट, प्रेफरेंस विल बी लाइक दिस. हो गया? इसका नाम टू ब्रोमोफेनॉल. राइट विशाल? 2 bromophenol. Okay, let's write down. So वो से important कर दो. What will be the sequence and the naming? हो गया? Yeah. Now, after IUPAC nomenclature, preparation of phenol. Okay? By chlorobenzene. Okay? The first method is and second method is Dow's process. Dow's केमिकल का नाम सुना है? It's very famous chemical company. Rashing. RASHING. Okay? Yes.
cumin. Okay. Diazotization method. So there are 4 methods for the preparation of phenols by using chlorobenzene. By using chlorobenzene, there are again 2 methods: by Dawes process, by Rassing process. Second one is by using benzene sulfonic acid, and third one by cumin, that is nothing but isopropyl benzene and or 2-phenyl propane, and fourth one is by using aniline diazotization method. What is Diazo, right? Just write down few names, name of few compounds. Okay, what you call this? What you call this? Nitrohydrogen. That's a nitrous acid. Okay. What? Nitrous acid. Okay. इसको just write down note. Okay. And इसको कहीं ऊपर मार्जिन में लिखो. Okay. So this is a nitrous acid. Okay. Now what is this? Nitric acid, right? What is this? Phosphorus acid. Okay? Phosphorus acid. This phosphoric acid. This ferrous. Ferrous. Don't use the word ferric. Use the word ferrous. Okay. Now, ferrous is present here in +2 oxidation state. You know, because of 2Cl -1 -2 हो गया, so उस साइड गया तो +2. So this is right. Now this one ferric chloride, right, in +3 oxidation state. ये सोडियम सल्फाइड. वेरी गुड. ओके. Sulfide. Okay. So you can write sulfide like this or like this. Don't be confused between these two. Both are same. Okay. कहीं भी जो भी नाम आएगा, डोंट थिंक दैट इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट्स राइट. ओके. सोडियम सल्फेट. So again
PHATE or FATE. Okay, both names are right. Okay, now again I replace this NHF. ये कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक चीज, इसकी एक वैलेंसी बराबर है, इसकी एक वैलेंसी बराबर है, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी 6 हो सकती है, 4 भी हो सकती है. इन दिस केस इट इज +6. ओके, सो दिस इज Na2SO4. नाउ दिस विल रिप्लेस बाय H. तो क्या हो जाएगा, सोडियम बायसल्फेट. ओके, now this one, very good, sodium sulfite here. So इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पे 4 है, राइट, सल्फर इज 4, राइट. In this case sulfur is 4, while in that case it was in +6 oxidation state, right. So sulfur can be +4 or +6. Again if you remove this one, okay, by H, तो क्या नाम होगा, सोडियम बाय सल्फर. Right? These are the reducing agent, these are the oxidizing agent. This on reaction with ये पता है, ये टर्म पता है, एटमॉस्फेरिक. ओके, नॉट एटमॉस्फेयर, हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर was the temperature 623 to 633. Okay, what will happen here, what is the name of this, What is CLH? huh? CLH. So this is, now what is the name of that compound? Sodium. Sodium. What was that? What was this? ये क्या था?
Vishal? Sodium alk oxide. Okay. So what was that? Sodium alkoxide. What one will be this? Sodium benzoxide. You can use the word. तुम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? Sodium fen. हाँ आगे. Sodium phenoxide. Right? So sodium phenoxide. There are no conditions of oxidation. Heating 623 to 633 under 300 atmospheric pressure. Okay, we will get sodium phenoxide. Now sodium phenoxide will react with dilute HCl and will give phenol. This is Dawes process. Okay, Dawes method or process. This is a continuous step. Okay. Okay. What is the name of this compound? The below one. Everyone knows the below one. Calcium phosphate. Calcium phosphate. This one is silica. Silica only. Silica gel, whatever you can say. So these are the catalysts here. Okay. These are acts as a catalyst. They will not participate in the reaction. Okay. They will not participate in the reaction. So they will just increase the rate of the reaction between chlorobenzene and water. Right? Yeah. They will not participate in the reaction. They will just increase the rate of the reaction of chlorobenzene and water. Right? So just remove this. This is a very simple method. So this one must be used more extensively. No, it's not like that. It's depend upon the price और ये कितना अवेलेबल है नेचर में, कितना इसका एक्सपेंस है. ओके, चीप है या फिर it's not cheap. It's depend on these two conditions also. So they are the catalysts. They will not involve in the reaction. They will just increase the rate of the reaction between the chlorobenzene and the water. Okay? Are you not writing? Okay? इसे देखा है? बेंजीन. ओके, ये बेंजीन का H रहता है. ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है और ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. राइट? So this is benzene sulfonic acid. Right? Now let's react with this.
तो अभी इसका नाम पड़ा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, बाय प्रोडक्ट, सोडियम सल्फाइड. ओके, कैसे निकलेगा? sodium sulfide. Okay, this one was so again so sodium phenoxide again complete with the sodium phenoxide के आगे क्या स्टेप था, the Dow's process क्या था, so that is phenol. Here you can say it's a neutralization reaction, you know. Yes. Neutralization means reaction of acid and base. So here acid है, base है, so this is a neutralization reaction. What's the byproduct of this? Byproduct